The news is hot, it's on the street. Stories breaking, skip a beat. Sanglikars Weekly got the juice. Truth unleashed, no excuse. Weekly, what's the scoop? News so fresh you'll jump the hoop. Stories rolling, headlines pop. Sanglikars Weekly never stops. And for the second, not so wet Saturday of July 2026. A few stray thoughts, and a few general remarks, and a few points of view, by way of a roundup of the week. All my own musings. Climate first. Torrential rains have stopped here in Mumbai, but rains continue to batter Kerala, Uttarakhand, etc. And if despite such heavy downpour we have shortage of water, it is our fault, not El Niño's. Monsoon covers India, but rainfall is still uneven. The southwest monsoon has covered the entire country after advancing into the remaining parts of Rajasthan, Haryana and Punjab. IMD said the monsoon completed its nationwide coverage on Thursday, one day later than the normal date of July 8. Good rains over the past 8 days helped narrow the all-India seasonal rainfall deficit from 40% on June 30 to 14%. The southwest monsoon has been highly active over western India. With southwesterly winds loaded with moisture sweeping over the western Ghats and delivering intense rains along the Konkan coast, while other weather systems offshore are routing more moisture over Mumbai and the surrounding areas. In urban areas in general, rainfall intensity matters more than volume. Mumbai itself can generally absorb moderate rainfall over several hours. However, its drainage, like in many Indian cities, cannot handle several hundred millimeters in short bursts. Heavy rainfall also overwhelmed river catchments in parts of Maharashtra, including around Nashik, while high tides reduced the efficiency of Mumbai's stormwater drainage, worsening flooding in the city. Mumbai-Pune rail services were suspended after landslides in the Bhor Ghat and flights were affected. The closures of the Mumbai-Pune Expressway and the Mumbai-Goa Highway and significant flooding on the Mumbai-Ahmedabad Expressway were disruptive, speaking to the increasing erraticity of monsoon rainfall, the vulnerabilities associated with linear infrastructure projects, and the ease with which the effects of natural disasters are compounded by cascading failures. A chawl collapse in Mankhurd took the lives of 5 children. Mumbai lies on a peninsula built mostly on reclaimed land, former marshes, tidal flats, and low-lying coastal areas, creating the characteristic risk of higher flooding when rainfall coincides with high tide. It is compounded by decades of haphazard urbanization that has encouraged water to run off rather than be absorbed by the ground, forcing drains to handle more water than their design limits. After the July 2005 floods, when it received 944 millimeters in 24 hours, Mumbai launched the Brimstoward project and widened drains, installed pumping stations, and undertook pre-monsoon desilting. Many of these works remain incomplete, while some completed upgrades are based on assumptions about the monsoon that climate change has since undermined. Officials have also argued that pre-monsoon desilting helped reduce flooding in parts of Mumbai, but water on the Mumbai-Ahmedabad Expressway, the chawl collapse, deadly tree falls in Kurla and Are, lack of redundancies in public transport, and the BMC's belated advisory to builders to halt hazardous construction all suggest a governance lapse. Mumbai's accountability also remains split across the BMC for local drainage and roads, the IMD for forecasting, the NDRF,
2 railway zones, the state government, and highway authorities. Overall, the city has improved at shutting down to save lives and minimizing the death toll. But as climate change and urbanization evolve faster than infrastructure upgrades, simply waiting for system capacity to catch up to demand will be a failing strategy. Germany's deadly summer. 5,120 deaths and counting. Germany has recorded an estimated 5,120 heat-related deaths so far this year, according to the Robert Koch Institute. Most deaths occurred during the intense late June heatwave, with around 4,270 fatalities among people aged 75 and above. Women accounted for a higher share of deaths, largely because they make up a bigger proportion of Germany's oldest population. Breaking news. A deadly heat wave is sweeping across Europe, with reports indicating that more than 5,000 people have died in Germany, most of them aged 75 and older. Temperatures have climbed above 41 degrees Celsius, placing enormous pressure on hospitals, emergency services, and public infrastructure across Western Europe. Officials warn that the extreme heat has also increased the risk of wildfires and is urging people to stay hydrated, avoid prolonged outdoor exposure, and regularly check on elderly family members and neighbors. Health experts are calling for stronger heat action plans as Europe faces increasingly frequent and severe heat waves. Stay tuned to USA Breaking News for the latest updates. 5 Indian states have reached the World Bank's upper middle income threshold based on per capita income, even though India as a whole remains a lower middle income economy, according to World Bank classifications and state income data. The World Bank upgraded Sri Lanka, Vietnam, and the Philippines to higher income categories following sustained improvements in income levels. India, however, remains classified as a lower middle income country with an Atlas method per capita income of $2,760, only marginally above the lower middle income average of $2,488 and well below the upper middle income threshold of $4,636. Different Indias. Delhi leads the country with a per capita income of $6,217, followed by Karnataka, $5,579, Telangana, $5,407, Tamil Nadu, $5,329, and Gujarat, $4,734. All 5 comfortably exceed the World Bank's upper middle income cutoff. 3 other major states narrowly missed the threshold. Maharashtra reported a per capita income of $4,628, just $8 short of qualifying as upper middle income. Haryana followed at $4,627, missing the cutoff by $9, while Kerala, at $4,610, was only $26 below the benchmark. I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. India and Australia signed a civil nuclear arrangement that will pave the way for commercial uranium supplies to India. PM Modi said the pact will give fresh impetus to India's clean energy goals and strengthen long-term energy security. Australian PM Anthony Albanese said the deal will help India increase non-fossil fuel power capacity
while opening a new market for Australian uranium. Today we can confirm the signing of the administrative arrangement to enable uranium exports to India for peaceful purposes under the 2015 Australia-India Nuclear Cooperation Agreement. The arrangement facilitates Australian uranium exports to India to help increase the share of non-fossil fuel power capacity, providing an additional market for the Australian resources sector. India is not just a country we trade with, it is a country we trust. And let me say this to Victoria's great, strong Indian community who are here tonight. You are welcome here. Your children never have to choose between being proudly Indian and proudly Victorian, because in this state you can be both. And here in Victoria, you can be whoever you want to be, yet stay who you are. Sanglikars Weekly. India gets a once-a-week insulin shot. Not the daily dose anymore. India has launched a weekly, the world's first once-weekly basal insulin approved for clinical use in adults with diabetes. The long-acting insulin cuts the number of shots from 365 a year to just 52, while offering blood sugar control comparable to daily basal insulin. A weekly uses insulin icodec, which binds to the blood protein albumin and stays active in the body through the week. Managing diabetes often means dealing with daily insulin injections, something many patients find difficult to continue over the long term. Now, a new treatment launched in India could make diabetes management far simpler. Novo Nordisk has introduced a weekly, also known as insulin icodec, the world's first once-weekly basal insulin for adults with type 1 and type 2 diabetes. Instead of taking one injection every day, eligible patients may now require just one injection a week, reducing the number of annual injections from 365 to only 52. The company says fear of daily injections is one of the biggest reasons many patients delay starting insulin therapy, often by 7 to 9 years. A 700-unit pack of a weekly is priced at Rs 2,611 or around Rs 3.73 per unit, making it about 30 to 40% cheaper than many daily basal insulin options currently available. Doctors have welcomed the launch, saying clinical studies have shown blood sugar control comparable to and in some cases better than daily basal insulin. India has over 10.1 crore people living with diabetes. Experts believe this once-weekly insulin could improve treatment adherence and encourage more patients to begin insulin therapy without the burden of daily injections. You are watching Sanglikars Weekly. NIA traces Pahalgam conspiracy trail to Hafiz Saeed cross-border plot. The NIA filed a fresh charge sheet naming Hafiz Saeed in the Pahalgam terror attack case. It accused Saeed of planning the cross-border conspiracy as Lashkar-e-Taiba and TRF. The agency said the charge sheet was backed by scientific and on-ground evidence. The NIA charged Saeed with waging war against India under the BNS and UAPA. Investigators earlier traced TRF's online claim and denial of the attack back to Pakistan. The case followed 22nd April attack in 2025 that killed 26 people and led to India's Operation Sindoor. Like, by arraying LET's Hafiz Saeed as the main accused in Pahalgam terror attack, what do we achieve? This rogue terrorist is roaming free in Pakistan, thanks to US protection. Like Pakistan gangster, Shahzad Bhatti spreading his tentacles in Maharashtra is a matter of grave concern. Cops have enough on hand to control Lawrence Bishnoi gang.
पाकिस्तानमधील कुख्यात गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्या कथित नेटवर्कचं सांगली कोल्हापूर कनेक्शन तपासण्यासाठी महाराष्ट्र एटीएसने चौकशीची मोहीम सुरू केली आहे. सोशल मीडियाद्वारे आंतरराष्ट्रीय गँगस्टर्सशी संपर्क असल्याच्या संशयावरून कोल्हापुरातील 2 तरुणांना ताब्यात घेऊन तब्बल 8 ते 10 तास त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीमध्ये ठोस माहिती न मिळाल्याने त्यांची सुटका करण्यात आली असली तरी पुढील चौकशीसाठी त्यांना शहराबाहेर जाण्यास मज्जाव करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. U.S. charges Bishnoi, Goldie Bra in Nijjar murder. U.S. federal prosecutors have charged jailed gangster Lawrence Bishnoi and Goldie Bra with ordering the 2023 assassination of Khalistan separatist Hardeep Singh Nijjar in Canada. Nijjar was shot dead outside the Guru Nanak Sikh Gurdwara in Surrey, British Columbia. Meanwhile, the United States has announced the largest ever action against India-based transnational organized crime networks and syndicate under a joint international operation named Operation Hardball. The law enforcement agencies from the United States, Canada and parts of Europe have arrested at least 24 suspects. Amid all the existing names, one rings a bell. It's one that already has made headlines in the country for multiple reasons. Lawrence Bishnoi. Pakistan is facing a violent insurgency in Balochistan. 3 separate militant attacks in the last 4 days have killed 42 people. The death toll also includes about 18 police officers and 11 soldiers. The latest attack took place at the Mangi Dam project, and according to the local officials, a gunman stormed a checkpoint guarding the dam, killing about 9 police officers and several others who are now said to be missing. Speaking at a press briefing, the military spokesman Ahmed Sharif Chaudhry has vowed to hunt and to hurt the attackers. He said that the Pakistani forces have killed about 54 militants in the ongoing operations. Attack in Karachi. Pakistani security forces killed 6 terrorists and captured another alive after foiling a brazen attack by militants on a Sindh Rangers compound in Karachi on June 27, 2026. The attack left 4 paramilitary personnel dead and marked the city's first major terrorist strike since October 2024. According to a reliable security source, the attackers, belonging to Jamaat al-Ahrar, a splinter faction of the banned Tehrik-e-Taliban Pakistan, stormed the Sindh Rangers Battalion Wing headquarters in Karachi's densely populated Gulistani-Jaha area and carried out the attack. An explosion followed by bursts of gunfire has been reported near the Pakistan Rangers headquarters in Karachi. $100,000 ransom twist. Pakistan gang rape case takes dramatic turn. Ishaq Dar's relative in spotlight. 2 foreign women alleged they were lured to Pakistan with the promise of a cryptocurrency venture. They claimed they were kidnapped, sexually assaulted, and held for ransom in Lahore. Police arrested 4 men, including Raza Dar, a relative of Pakistan's Deputy Prime Minister Ishaq Dar. Victim alleges $100,000 ransom. One of the women told a magistrate that Raza Dar claimed he had received $100,000 for their release. A Lahore court remanded the 4 accused to 5 days of police custody, while authorities believe the women may have already left Pakistan. Investigators are also examining whether a $1.5 million cryptocurrency dispute is linked to the case. In a major development that has sent shock waves through the political corridors of Pakistan, the Lahore police have booked a high-profile case involving alleged kidnapping, gang rape, extortion and blackmail against the grandson of the country's Deputy Prime Minister and Foreign Minister. According to the FIR, he has been identified as the prime suspect, allegedly abducted, sexually assaulted, threatened and even recorded videos of 2 victims who are from the Netherlands and Venezuela. Urgent search for 5 missing crew members after a Pakistani cargo plane crashed into the Arabian Sea last night. And now pieces of the Boeing 737 have been recovered. NBC's Tom Costello has the latest on the investigation. Tom, what are you learning?
Yeah, Tom, the only clues come from Pakistani authorities who say the pilots reported some sort of problem with their navigational system before controllers lost radar and radio contact. The few photos that we have seen from Pakistani authorities show several large pieces laid out on the deck of a Pakistani naval ship. Pakistan received $3.5 billion in workers' remittance in June 2026, according to the State Bank of Pakistan, up 2% compared to the same month last year. For the full financial year, remittance totaled $41.6 billion, an increase of 8.6% over the previous year. Saudi Arabia remained the largest source of inflow at $829 million, followed by the UAE at $792 million, the United Kingdom at $514 million, and the United States at $296 million. You are watching Sanglikars Weekly. China has issued a cautious warning to New Delhi and Tokyo following the 16th India-Japan Annual Summit, where Prime Minister Narendra Modi and Japanese PM Sanae Takaichi unveiled a series of landmark defense and economic agreements. China has reacted to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's visit to India. A foreign ministry spokesperson in Beijing warned the two countries against forming exclusive cliques, saying that cooperation between India and Japan should not target the interest of third parties. Beijing's comments came after New Delhi and Tokyo announced a major expansion of technology, defense and security ties. New Delhi and Tokyo unveiled cooperation in artificial intelligence and critical minerals, while also pledging to strengthen supply chain resilience in strategic sectors such as semiconductors and advanced materials. Beijing's warning also comes against the backdrop of strained China-Japan relations, given China's dominance in strategic sectors like critical minerals, advanced materials and semiconductors. Countries including India and Japan and others in the Indo-Pacific region are increasingly diversifying their supply chains to make them resilient to any disruptions. These developments seem to have rattled Beijing, which sees its dominance in these sectors a critical leverage in bilateral and multilateral ties. Beijing also fears bilateral and minilateral groupings in the Indo-Pacific like the Quad as an Asian NATO designed to structurally encircle and isolate China. The Modi-Takaichi joint statement explicitly emphasized a free and open Indo-Pacific, a direct rebuke. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. Ex-CM Arvind Kejriwal's Sheesh Mahal may be turned into a state guest house, sources say. अरे रो रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी बैठकर यार, उनका सपनों का शीश महल जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जनता का 1-1 करोड़ पैसा जोड़कर बनाया था, आज उसे दिल्ली स्टेट गेस्ट हाउस और कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है। बड़ी नाइंसाफी है भाई, लेकिन लिव विद इट केजरीवाल जी, क्योंकि आपने बीजे ऐसा बोया था। दोस्तों बात यह है कि सिविल लाइंस के 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल अपने चीफ मिनिस्टर रहते हुए लगभग 1 दशक तक रहे, जिसे उन्होंने एक नॉर्मल सरकारी बंगले से शीश महल में बदल दिया, ये प्रॉपर्टी अक्टूबर 2024 से खाली पड़ी थी। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस बंगले को दिल्ली स्टेट गेस्ट हाउस कम कल्चरल सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यानी अब यहाँ मेहमानों के ठहरने के कमरे होंगे, एक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, मीटिंग स्पेसेस होंगे और एक ऑडिटोरियम भी होगा जहां कल्चरल और आर्टिस्टिक इवेंट्स, एग्जीबिशंस और ऑफिशियल सेरेमनीज हो सकेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रपोजल अपने फाइनल स्टेज में है और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो प्रॉपर्टी की मौजूदा हालत की पूरी डिटेल सरकार को सौंप दें। इंटरेस्टिंग बात लेकिन इसमें यह है कि दिल्ली बाकी राज्यों की तरह अपना कोई डेजिग्नेटेड स्टेट गेस्ट हाउस नहीं रखता, इसलिए जब भी देश विदेश से डेलीगेशंस आते हैं सरकार को अलग से इंतजाम करना पड़ता है उनके लिए। सो अब यही बंगला उस काम के लिए भी इस्तेमाल होगा। लेकिन भाई एक सरकारी बंगला ये शीश महल कैसे बन गया, आओ मैं आपको बताता हूं। तो अभी हाल ही में रिलीज की गई सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इस बंगले के रेनोवेशन में 33.66 करोड़ खर्च हुए, जबकि कुछ रिपोर्ट इसे 45 करोड़ तक बताती हैं। पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री लिस्ट में जो सामान निकला वो किसी रॉयल महल से कम नहीं था। 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवीज जिनकी कीमत 64 लाख रुपए है, मोटराइज्ड कर्टेन्स जिनकी कीमत 4 से 6 करोड़ रुपए के बीच है, जापानी ब्रांड टोटो का स्मार्ट टॉयलेट सीट जिसकी एक यूनिट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए है। ऐसे कई टॉयलेट सीट बाद में गायब भी पाए गए। साथ में मसाज चेयर, स्मार्ट फ्रिज, स्टीम ओवन
भवन, हर चीज लाखों में है। मतलब जो पार्टी आम आदमी का नाम लेकर के सत्ता में आई थी, उसी पार्टी के मुखिया का बाथरूम आम आदमी के सपनों से बहुत दूर निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक रेनोवेशन का शुरुआती एस्टिमेट खर्च जितना बताया गया था, असली खर्च उससे 340% ज्यादा निकला, यानी कुल 33.66 करोड़ रुपए। और इसमें से अकेले 18.88 करोड़ रुपए सिर्फ सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस, आर्टिस्टिक, एंटीक एंड ऑर्नामेंटल चीजों पर खर्च हुए। अब चलो, आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को तो जो करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन वही बंगला जो शीश महल बना था, अब सरकारी मेहमानों की मेजबानी और कल्चरल इवेंट्स की जगह बनाने जा रहा है। देखो भाई, सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जो सवाल जनता के पैसों पर उठ जाते हैं वो ईंट दर ईंट इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। समझे केजरीवाल जी? शीश महल में रहते हैं तो ये सच्चाई है। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी की संविधान की, गरीबों के संविधान की। Sanglikars weekly, the ink never dries. Sanglikars weekly, it's all here for you. A fresh political storm has hit West Bengal. After launching a blistering attack on rebel TMC leaders, Mamata Banerjee accused them of betraying the party and working at the BJP's behest. In a strongly worded address, Mamata Banerjee said, বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত। পার্টির সাথে বেইমানি না করে, যে পার্টিটা আপনাদের কাছে জন্মদাত্রী মা, আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন। এখন বিজেপি করবেন আর তৃণমূল বলবেন, এটা হতে পারে না। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ বিজেপি বিরোধী। মনে রাখবেন, আমাদের একটা আদর্শ আছে, আমাদের একটা নীতি আছে। আপনারা যারা বেইমানরা, গদ্দাররা, বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা মতো চলছেন, বিজেপি স্পন্সর যারা, তারা আমি বলবো, যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে, যান গিয়ে বিজেপিতে গিয়ে জয়েন করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও বুঝবো আপনারা বিজেপিতে চলে গেছেন। বিজেপিতে থেকে দল ভাঙার চক্রান্ত, ভাবেন কি জানি মরে গেছি? ভাবেন কি আমাদের কর্মীরা মরে গেছে? ভাবেন কি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস মরে গেছে? মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার, আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে আপনি সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি সিম্বল আপনার পক্ষে যাবে না, কিন্তু ধরে নিলাম যদি ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয়, তাতে কি যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কংগ্রেসরা গ্রহণ করে। আমি এই সিম্বল দিয়ে 1 মাস 22 দিনের মাথায় আমি কিন্তু লড়াইটা করেছিলাম। তখন আমি সিম্বলটাও কাউকে চেনাতে পারিনি। আর এখন দরকার আমি গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন? অত সস্তা নয়। হ্যাঁ, কণ্ঠরোধ করতে গেলে আপনাদের আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে হবে। তার তো চেষ্টা কম করেননি। কাকে মারেননি? Amid the escalating row, senior TMC leader Chandrima Bhattacharya resigned from all party posts, saying the chief minister's remarks during a phone call deeply hurt her. कल आपको देखे हैं, वो दोहराएंगे नहीं हम। एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहाँ पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में। तो वो उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन। तो ये हमें बहुत दुख लगा, क्योंकि हमको हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे, और कल भी हम वैसे ही आए। तो ये बोलने का कोई तो हम बात नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला, हमको दुख लगा। Despite the resignation, TMC leaders have maintained that Chandrima Bhattacharya's departure will have no impact on the party or its support base. Mamta Devi, her only failing is that she is an emotional, that's both a strength and a weakness, but she's an emotional person who prides loyalty and is very forgiving. So it's happened in the past. Most of these people are all history sheeters. A lot of them are history sheeters who have done things that you could have seen the signs that were coming. But Devi is always blind to those signs. And had we won again, let me tell you, the same Bobby Hakim would have got 5 ministries.
the same Arut Biswas could have got 5 ministries. And we would never been able to separate the wheat from the chaff. So in a way, I'm very happy it's happened. In a way, I'm very happy at the speed at which it's happened. So this cleansing, which we would have done slowly, and after much fighting, getting Mamta Didi to see that these people are what they are would have taken us a long time. So this is very good. What Mamta Didi and what we couldn't do, BJP's done, Shubhendu Da has done for us very quickly. Sanglikars Weekly, the ink never dries. Sanglikars Weekly, it's all here for you. On day 13 of Wangchuk hunger strike, Abhijit Dipka quoting Wangchuk wrote, "Any attempt by the authorities to remove me from Jantar Mantar would amount to a violation of my rights." True. या आपको हटाने की कोशिश होती है, उस वक्त में क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्यों कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हूँ, मैं रजामंदी से खुद रह रहा हूँ और मेरे जान को अभी तो कोई खतरा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो ऐसे में क्यों करें मुझे नहीं समझ आएगी। और करते हैं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश और दुनिया ये भी देखेगी और लोकतंत्र की हालत भी देखेगी। Sanglikars Weekly, the ink never dries. Sanglikars Weekly, it's all here for you. वांगचुक तुम संघर्ष करो, हम खाना खा के आते हैं। भाई साहब, ये चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट में। अगर आपने देखा होगा जंतर मंतर के ऊपर वांगचुक जी बेचारे, उनका वजन कम होता जा रहा है, वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर जो लोग हड़ताल के लिए पहुंच रहे हैं, जो उसका सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको वहां पर मोहम्मद भाई आप सबका ध्यान रखिएगा। कड़ी डालिएगा, कड़ी थोड़ी कड़ी कम पड़ी, कड़ी और डालिएगा यार। ये क्या प्रोटेस्ट को बना दिया आपने? इंटेंशन सही था, मोमेंटम भी सही था, हम तो इसको जेनजी प्रोटेस्ट बता रहे थे। वहां पे बेचारे 60 साल के वांगचुक जी हैं, सितंबर में मैं उनका बर्थडे देखा, 60 साल के हो जाएंगे, वो बेचारे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। और दिक्कत जानते कहाँ पे हुई? दीपके ने इनको चूना लगा दिया। कैसे? दीपके खुद चले गए संभाजी नगर अपने घर महाराष्ट्र में, और बेचारे वांगचुक जी यहाँ पे इंतजार में। नहीं, ये आप अपने शब्दों का चयन ठीक से करिए, क्योंकि देखिए मेरा कहना यह है कि चूना लगाने की बात नहीं है। दीपके जी का कहना है कि अगर वो भी बैठ जाएंगे भूख हड़ताल के ऊपर, तो फिर वांगचुक जी का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा। ये जो प्रोटेस्ट के लिए पूरी बंदोबस्त किया जा रहा है, वो बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? और दूसरी चीज ये है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। अब इसने प्रोटेस्ट का भी प्रमोशन वो नहीं करेंगे, तो लोग कैसे आएंगे वहां पर? तो मुझे लगता है कि सब लोगों को वहां पर नहीं भूख हड़ताल के लिए बैठना चाहिए, कुछ लोगों को खाना खाते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा बुरा तो लगता है भाई। अगर कोई दीपके ने क्या कहा, क्या कहता है, वांगचुक जी जो है वो सीजन वेटरन फास्टर है। हाँ। उनको इस बातों का एक्सपीरियंस है। वांगचुक ने मतलब वांगचुक जी को एक्सपीरियंस, वो बैठ चुके हैं ना पहले 40 दिन तक वो बैठ चुके हैं। अभी तो हाँ। उनका 10वां दिन, जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 10वां दिन है उनका ये, तो वो तो सीजन वेटरन है। और इन्होंने दीपके जी ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो मेरे को लगता है आपको सुनना चाहिए, जो उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है। तो व्यक्ति लिख रहा है दीपके के लिए कि यू शुड ऑल्सो श्रेड सम वेट, आप भी थोड़ा वजन कम कर लो और सपोर्ट दिखाने के लिए। लेकिन अब मेरे को लगता है यही मुद्दा रह जाएगा कि देखिए वांगचुक जी तो संघर्ष कर रहे हैं, दीपके कब भूख हड़ताल में बैठेंगे। Prashant Kishore set for electoral debut in Bihar bypoll. Massive political shift in Bihar. Acclaimed election strategist turned politician Prashant Kishore is officially making his electoral debut. The Jan Swaraj Party has announced Kishore as its candidate for the upcoming high-profile Bankipur Assembly by-election scheduled for July 30th. Bankipur has been an unshakable stronghold for the BJP since the 1990s. The seat fell vacant after sitting MLA Nitin Nabin stepped down following his election to the Rajya Sabha and appointment as the BJP national president. Following Jan Swaraj's zero-seat debut in the 2025 Bihar Assembly elections, this bypoll is being labelled by Kishore himself as a direct referendum on the current NDA government led by Samrat Chaudhary. Can Prashant Kishore dismantle the BJP's urban fortress in Patna?
का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. The 50 JS of Jihad, roll over new JNK textbook glorifying terrorists. A massive political storm that erupted in Jammu and Kashmir over this controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presented separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwaiz Umar Farooq in a favourable light and referred to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demanding strict accountability. ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं. जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम, उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे? भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे? भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे? Kerala. Like, Kerala University mistakenly printed answers with question papers. Examiners wanted to leave no scope for mistakes. Well, yes, it is a major lapse that has happened when University of Kerala was conducting the exam for second year BSc chemistry, BSc statistics students, where the answer itself was mentioned in the question paper. And one of the questions, which is fifth question, the answer was given below that itself. This was noticed when the question paper was given to the students for answering. Only after that it was come to the notice of the examination in charge that the answer was given there. Immediately examination controller has said that an inquiry will be conducted. They will look into the matter. How did this error happen? And also the board of examination has been asked to give a justification on what happened and why this major lapse has happened. So we need to wait and watch what was the reason. As of now, controller of examination has clearly said that an inquiry is underway and they will look into it what exactly happened. 7 crores stolen. What is Ram Mandir controversy? Ram Mandir donations were robbed from devotees. Step number 1. Devotees obviously visit the temple. They offer cash, gold and silver directly into the Dan Patras, placed near the sanctum sanctorum of the temple itself. These are AI generated images just to give you a sense of how this would have happened. Step 2. Cash and gold and silver are then moved to a secure, confidential counting room. Step 3. The accused, 8 people have been arrested, keep that number in mind. The accused would have kept key CCTVs overlooking the vault switched off during this crucial transfer of those donations to the confidential and secure room. Step number 4. During the counting, the accused personnel would have deflated the actual figures, vouchers, and the log books would have been fudged. That's the first level of the deception. Step number 5, the stolen cash and gold silver would then have been smuggled out of the high security complex, outside the Ram Mandir and outside the compound walls. Step number 6, the cash and gold silver would have been hidden in the accused employees' residences, and there are various reports to suggest this is where the raids actually found all that cash. Step number 7, doctored gaps left in the audit logs, which is where the glaring transactional cracks actually came to light. Step number 8, attempts to delete CCTV archives to clear counting room manipulations would have been the final step to
close the circle on the entire theft. Now I want to introduce you to the key faces of the trust and the players involved in this entire saga that is unfolding right now. Now here is the temple trust itself. Mahant Nritya Gopal Das is the president of the trust. Champat Rai is the general secretary who has resigned. Swami Govind Dev Giri Maharaj is the treasurer. Ripendra Misra, chairman of the construction committee. Ex officio and nominated members include Prashant Lokhande, IAS of the central government representative, Shri Sanjay Prasad, state government representative, Shri Shashank Tripathi, district magistrate of Ayodhya. And then there are 8 persons who have now been arrested. 2 resignations have taken place so far. Ramaya to Shivaya. God's coffers under cloud, as humans steal from Supreme. Another scam after Ram Temple. An NGO alleged a major theft of donations by a temple committee employee at the Bodrinath shrine in Uttarakhand. The group urged authorities to examine CCTV footage to verify the alleged financial discrepancies. The allegation comes just days after similar claims of donation irregularities surfaced at the Ram Temple in Ayodhya. Uddhav launches Ram Raksha campaign over Ayodhya donation row. जसं एकदा अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, जेव्हा मी सांगितलं ना 90चा काळ होता की अब हिंदू मार नहीं खाएगा, तसं आज मी म्हणतोय की अब हिंदू माफ नहीं करेगा. जे जे मंदिर लुटतायत, मग ते भाजपचे कोणी असतील किंवा आणखीन कोणी असतील, पण लेकिन अब हिंदू माफ नहीं करेगा उनको. जे जे मंदिर लुटतायत त्यांना हिंदू त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याची सुरुवात आम्ही येत्या रविवारपासून करतो. येत्या रविवारी 5 तारखेला संध्याकाळी 4च्या सुमारास दादर इथे कोणे एकेकाळी जो एक कबूतरखाना होता, तिथे एक मारुतीचं मंदिर आहे. त्या मंदिराच्या समोर तमाम हिंदूंना ज्यांना ज्यांना असं वाटतंय की भाजपच्या कालखंडामध्ये हिंदुत्व धोक्यात आले म्हणून ज्यांनी मोर्चे काढले होते त्यांना सुद्धा मी आमंत्रित करतोय. पक्ष वगैरे न बघता जे जे राम भक्त असतील, जे जे हिंदू आहेत, ज्यांना ज्यांना रामाच्या मंदिरात होत असलेली चोरी ही सहन होत नाहीये, पण जाब विचारायचं वाटतोय, ते सगळेजण तिकडे 4च्या सुमारास जातील. मी स्वतः तिकडे जाणार आहे. माझ्यासोबत शिवसेनेचे नेते असतील, लोकप्रतिनिधी असतील आणि मी तर म्हणे केवळ शिवसैनिकच नाही तर तमाम राम भक्त असतील. ज्यांनी ज्यांनी हिंदुत्व सोडलेलं नाही, ज्यांनी ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडलेले नाहीत, ते सुद्धा हिंदू असतील तर याच्यामध्ये येऊ शकतील. त्यांनी यावं आणि तिथे मग आम्ही रामरक्षा आंदोलन करतो. ओम श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र सिया बुध कौशिकर्षे सीता रामचंद्रो देवता अनुसुरकन्ना सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलका श्री रामचंद्र तीर्थ से जपे ध्यान विनियोग अतदियानंद जय दादा हनुमान हृदयोदशा भक्तपद्मासनस्थ पीतं वाधोवसारां कमकमलदलस् परिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोडसीता उपगमनविरल्लोलोचनं नीललाभं नानालङ्कारयुक्तं वरदमुरका मण्डलं रामचन्द्रम् इति धियानं चरितं रघुनाथस्य. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. Justice Varma inquiry report to be tabled this session, says O.M. Birla. Lok Sabha Speaker O.M. Birla said the inquiry report of the 3-member committee against Justice Yashwant Varma will be tabled in Lok Sabha in the monsoon session. The report follows allegations linked to the discovery of burnt cash at the judge's official residence. The development marks the next step in the parliamentary process as lawmakers prepare to examine the findings and decide on further
जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे। पुलिस ने इनके घर पर एक्सीडेंटली 15 करोड़ का अनडिक्लेयर्ड कैश डिस्कवर किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके अगेंस्ट 3 मेंबर इंक्वायरी पैनल भी बैठता है और इस बीच में इनकी सारी पावर्स एज दिल्ली हाई कोर्ट जज विड्रॉ कर ली जाती है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जो फाइंडिंग्स आ रही है पैनल की और जो पिक्चर्स भी आ रहे हैं उसे भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट करता है, पब्लिश करता है, पब्लिक के साथ में एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसके बाद में अब हम देखते हैं कि taken oath as a judge in Allahabad High Court. इसके बाद में अब हमें नजर आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन इसे कड़े शब्दों में कंडेम कर रहा है। इनफैक्ट ये समझिए कि फिर हाई कोर्ट में उनके कोर्ट में अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को लगेगा पता नहीं दूसरे साल से कितना पैसा लिया है। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज है जो पैसा लिए थे 15 करोड़ वाले? और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट PIL भी दायर की गई है। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं। Teaching Bhagavad Gita, yoga not per se religious. FCI registration can't be denied on compounded violation, rules Madras High Court. Bhagavad Gita may be recognized as national, Rashtriya, Dharma Shastra. It speaks about internal and eternal truth. Bhagavad Gita cannot therefore be confined within a given religion. It is a part of Bharatiya civilization. The Madras High Court has ruled something very interesting. He said that the teaching of Bhagavad Gita, Vedanta and Yoga is not religious activity. Under the FCRA, by the way. The court observed that these are integral to India's civilizational heritage and of course representing these particular things are ethical, philosophical and educational traditions that transcend religious boundaries. These could be learnt by anyone. A significant observation considering what's happening right now in the country and quite a stunning one as a matter of fact. On 22nd of June, the Ministry of Home Affairs notified the latest amendment to the Foreign Contribution Regulation rules, which for the first time specifies the list of activities that can be pursued by non-government organizations and associations. The earlier notifications required NGOs to give an undertaking that the acceptance of foreign funds is not likely to prejudicially affect the sovereignty and integrity of India or impact friendly relations with foreign state and does not disrupt communal harmony. This is the 10th amendment since 2011 and it comes amid growing scrutiny of how NGOs receive and use foreign funds. First, let us understand what is the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA and what are the rules governing it. The Ministry of Home Affairs regulates foreign donations in the country through the FCRA to ensure that such funds do not adversely affect the country's internal security. The legislation was first enacted in 1976. In 2010, it was repealed and replaced with a new law. The 2010 Act came into force on May 1, 2011 and has been amended in 2016, 2018 and 2020. The rules, on the other hand, enable an act passed by the Parliament to be implemented and must be notified in the Gazette of India. The FCRA registration is valid for 5 years, after which the NGO has to apply for a renewal. Since 2015, the FCRA registrations of more than 18,000 NGOs have been cancelled. As on June 22nd, there are 14,456 FCRA registered NGOs active in the country. MHA has said that FCRA registered NGOs receive approximately Rs 22,000 crore annually. Members of legislatures, political parties, government officials, judges, media persons are prohibited from receiving any foreign contribution. However, in 2017, the MHA through a finance bill route amended the 1976 repealed FCRA law, paving the way for political parties to receive funds from the Indian subsidiary of a foreign company where an Indian holds 50% or more shares. The biggest change in the June 22 amendment is that NGOs must now clearly specify the exact programs or purposes for which they want foreign donations. General categories have been done away with. Under the FCRA Act, NGOs can receive foreign contributions for 5 programs or purposes: social, educational, religious, economic and cultural. They must choose from a government prescribed list and also declare the specific states or union territories where the funds will be used.
In short, foreign funding is now tied to clearly defined and pre-approved activities and geographical areas. The rules further broadens the definition of key functionary of an NGO beyond office bearers and directors to include trustees, partners, the karta of a Hindu undivided family, governing body members, or anyone controlling or managing the organization. It also requires NGOs to mandatorily disclose social media accounts, websites, and declare whether the association or its key functionaries has brought out any publication during the year, which includes book, magazine, or a newspaper article. But there's more. The rules tighten restrictions on political and ideological content. For example, educational programs on constitutional rights must be strictly non-political. Cultural activities must exclude ideological content, and religious activities are allowed, but proselytization is clearly barred. The educational purpose lists 22 activities, but adds the clause strictly non-political in nature after the category on awareness programs on constitutional rights, fundamental duties, and civic responsibilities. The cultural purpose lists promotion of contemporary arts inspired by Indian traditions among 18 categories, but adds excluding political ideological content. As many as 16 categories of religious activities have been permitted, which includes conduct of religious education, moral instruction, satsangs, discourses, and meditation retreats, excluding proselytization, and burial, cremation ground development and maintenance. There are 19 categories under economic purpose and 30 items under the social category. Violating these rules can be costly too. If funds are used for purposes other than those approved, NGOs can face penalties of up to 30% of the amount misused or rupees 1 lakh, whichever is higher. The same applies if funds are spent in unapproved regions or on unapproved activities. Overall, the message is clear: tighter oversight, defined activities, and stricter accountability for foreign funding. Thank you. Like, if there was any doubt, murders in Pune, Meghalaya, and Agra have dispelled impression that women can't commit cold-blooded diabolical murders. Agree? Like, Dept of Justice of USA says case against Gautam Adani should never have been filed. Utter duplicity. The U.S. Department of Justice has asked the court to permanently drop the Adani case. The Department of Justice has told the court that the case should never have been brought for prosecution. The Department of Justice has also claimed before the court that the prosecution was legally flawed. DOJ has defended the decision to dismiss the case. This is a big and a massive development. The case could have caused diplomatic strain between the two nations. Like, ED has arrested in Oman Saurabh Chandrika, promoter of betting APP Mahadev, and attached his property worth 941 rupees crores. In a significant development regarding the Mahadev betting app case, Indian authorities have made a major breakthrough. Sources indicate that Saurabh Chandrakar, the app's owner, has been detained by Interpol and efforts to bring him back to India are underway. The Enforcement Directorate is expected to bring him back within a week. Interpol has communicated this information to the Central Bureau of Investigation, which is the primary agency involved. Sanglikars Weekly. Like, CBI arrested Reliance Capital's Amit Bapna, CFO. All except Anil Durajwal and Boni are in jail. Central Bureau of Investigation arrests former Reliance Capital Chief Financial Officer. The Central Bureau of Investigation arrested former Reliance Capital Limited CFO Amit Bapna on July 4, 2026. Officials said he allegedly approved loans against RBI guidelines. The agency showed that borrowed funds got diverted to various group companies. Bapna is now in police custody for 4 days following his recent arrest. Like, Telangana's top cop Sankareddy Bimreddy is arrested on corruption charges with 300 rupees crores assets. Any proof needed to prove corruption? Like, Calcutta High Court reducing sentence for dowry harassment suicide death by observing such harassment is not rare is rather strange and unfortunate.
तो आपको बता दूं कि कोलकाता हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के मामले में दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दी है। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के मामले ना तो बहुत दुर्लभ है और ना ही मामले में आजीवन कारावास देना आवश्यक है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्वा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दहेज मृत्यु के प्रत्येक मामले में आजीवन कारावास अनिवार्य नहीं है। ये सजा केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए और इसी आधार पर अदालत ने दोषी सजल पारुई की सजा आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दी, जबकि जुर्माने की सजा बरकरार रखी। हाई कोर्ट ने सजल पारुई के माता पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। निचली अदालत ने दोनों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत सजल पारुई की दोष सिद्धि को भी बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति द्वारा पत्नी पर पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लाने का दबाव बनाना भी दहेज की मांग की श्रेणी में आता है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार किया कि लगातार आर्थिक दबाव और प्रताड़ना के कारण चयनिका ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। मामले के अनुसार अप्रैल 2010 में सजल पारुई और चयनिका की शादी हुई थी। विवाह के समय वधू पक्ष की ओर से सोने के आभूषण, नकदी और घरेलू सामान दिए गए थे। बाद में पति और उसके परिवार ने अधिक धन और पत्नी के पैतृक संपत्ति में हिस्से की मांग शुरू कर दी। चयनिका के भाई ने बाद में संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर उसे उसका हिस्सा भी दिया। जून 2014 में चयनिका के भाई को ससुराल से फोन आया। वहां पहुंचने पर उसने अपनी बहन और भांजी के शव कमरे में पड़े पाए। इसके बाद पुलिस ने दहेज मृत्यु का मामला दर्ज किया। अदालत ने यह भी कहा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू होने के बावजूद दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु आज भी गंभीर सामाजिक अपराध बने हुए हैं। वहीं धारा 304 ऐसे मामलों में यह कानूनी धारणा स्थापित करती है कि अगर विवाह के 7 साल के भीतर किसी महिला की अस्वाभाविक मृत्यु होती है और उससे पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज मृत्यु का मामला बनता है। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए यह भी साफ कर दिया कि दहेज मृत्यु के हर मामले में उम्र कैद अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये केवल बेहद दुर्लभ यानी कि रेयर सेट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता भी जताई कि साल 1961 से दहेज निषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद हमारे समाज में दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराध आज भी बदअस्तूर जारी है। Like Tamil Nadu Chief Minister's film, Jana Nayagan is ready for release on the 24th of July, 2026. Will it be tax-free? நெஞ்சில் குடியிருக்கும் Like, I think ban on film Sutlej is uncalled for. It's a propaganda film.
आदित्य धर की कोई भी मूवी आए तो उसे ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा कहा जाता है, पर सतलज मूवी को राणा आयुब से लेकर सारे लिबरल्स एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं कि इसका इशू क्या है। फिल्म ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के लाइफ पे इंस्पायर्ड है। खालड़ा ने 1980s और 90s में पंजाब में एलिजेड फेक एनकाउंटर्स और इलीगल क्रिमेशंस पर आवाज उठाई थी, जिस इशू पर बेस्ड इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 127 कट्स करने लगाए। मेकर्स ने इसका विरोध किया, फिल्म 3 साल तक पड़ी रही और फाइनली ZEE5 पर रिलीज हुई और एक ही दिन में टेक डाउन की गई, क्योंकि फिल्म में कुछ इश्यूज है। ये जिस लाल डायरी और लार्ज स्केल डिसअपीयरेंसेस का नैरेटिव बनाती है, उसके कई फैक्ट्स वेरीफाई ही नहीं हुए। पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त मिलिटेंसी के खिलाफ बड़ी लंबी और खूनी लड़ाई लड़ी थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1700 से ज्यादा पंजाब पुलिस पर्सनल मारे गए, हजारों सिविलियंस भी टेररिज्म का शिकार हुए। लेकिन ये फिल्म पुलिस को विलन की तरह दिखाती है। ऊपर से खालड़ा को इस फिल्म में न्यूट्रल एक्टिविस्ट की तरह दिखाया गया है, जबकि उनके अकाली दल ह्यूमन राइट्स विंग के साथ कनेक्शन थे। सबसे बड़ा सवाल बैलेंस का है। अगर आप स्टेट के एक्सेस को दिखा रहे हो तो मिलिटेंट की एट्रोसिटीज भी दिखानी चाहिए। अगर विक्टिम की बात करते हो तो हर विक्टिम की बात होनी चाहिए, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो या पुलिस हो। हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर फिल्म वन साइड। Like, NPCI's Dilip Asby has joined SWIFT's global board. Good news of the week. India's top payments regulator is betting on artificial intelligence to fuel the next wave of digital growth. Dilip Asbe, chief of the National Payments Corporation of India, says AI will be heavily involved in expanding the country's digital payment ecosystem. Newer UPI applications could become more competitive if they adopt a viable commercial model. Like, in Cacophony, did you notice that DRDO has successfully test-fired Pinaka long-range guided rocket in Chandrapur with perfect accuracy? Great news! भारत की सबसे ताकतवर रॉकेट आर्टिलरी बनने वाली है और भी खतरनाक। डीआरडीओ ने 8 जुलाई को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का एक नया और सफल टेस्ट फ्लाइट पूरा किया। ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। इस बार रॉकेट को 60 किलोमीटर की यूजर डिफाइंड मिनिमम रेंज पर टेस्ट किया गया। डीआरडीओ के अनुसार रॉकेट ने उड़ान के दौरान तय किए गए सभी मैन्यूवर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद यह लगभग तय ट्रेजेक्टरी का पालन करते हुए सीधा अपने टारगेट पर जा गिरी। यानी जिस जगह डायरेक्ट हिट करना था, पिनाका एग्जैक्टली उसी जगह स्ट्राइक कर पाई। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह नहीं थी कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, बल्कि यह भी थी कि इस नई लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को इंडियन आर्मी के मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया। यानी आर्मी की इस नई क्षमता के लिए कोई नया लॉन्चर खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वही लॉन्चर अब अलग अलग रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। यानी एक धनुष और बाण कई कई। तो पिनाका का नाम जो है वो भी यही है, भगवान शिव जी का धनुष है, जिसको भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। दिव्य धनुष है, उससे अलग अलग प्रकार के हथियार और बाणों को आप दाग सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पिनाका रॉकेट लॉन्चर से भी आप अलग अलग रेंज की मिसाइल को दाग सकते हैं। इससे लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएंगे, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और बैटलफील्ड में जरूरत के हिसाब से अलग अलग दूरी के टारगेट्स को तुरंत एंगेज किया जा सकता है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट में हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी डीआरडीएल, रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस टेस्ट में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ लगे, बहुत सारे भारतीय एक्सपर्ट्स आए। इस सफल परीक्षण पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी और उन्होंने इसे इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट टेक्नोलॉजी के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पहले पिनाका को एरिया सैचुरेशन वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब गाइडेड वेरिएंट्स के आने के बाद यह केवल बड़े इलाके पर बहुत सारे रॉकेट बरसाने वाला सिस्टम नहीं बचा, बदल गया। नाम वही है, काम अलग है, बल्कि अब यह लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक करने वाला एक अत्याधुनिक वेपन सिस्टम बनता जा रहा है। आने वाले समय में भारतीय आर्मी के पास ऐसा रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम यह होगा जो कम समय में दूर बैठे दुश्मन के महत्वपूर्ण टारगेट्स और पास के भी टारगेट्स, इन सबको बेहद सटीकता के साथ नष्ट कर सकेगा, सिर्फ एक सिंगल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यानी पिनाका से। तो है ना पिनाका जबरदस्त। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Part 2 follows.